एंड गाइस आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे, देन हम लोग फिर करेंगे इनकी प्रिपरेशंस। सो आप लोग कंप्लीट ब्लॉग वॉच कीजिए एंड बने रहिए वीडियो में। अभी हम लोग स्टार्ट, देन जो कि हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा ही हुंडई। यार पढ़ेंगे यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से। एंड अभी फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट 1, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इसमें क्या है कि हम लोग सो कीप सब्सक्राइबिंग माय व्लॉग एंड लाइक कर दीजिए। एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। अरे वीडियो को कूपर कॉलोनी 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 यही यहाँ पे मिला लिखी लाइक अभी ट्यूब पर and Control C, then we have to move and control. यहाँ से हम शायद इसको करते हैं रिमूव इट। प्रगति ये है कि हम लोग सो कुछ क्वेश्चंस लाइक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इंटेलिजेंट
agents, then history, and scope of AI, and agent architecture, problem solving approach in AI. टॉपिक्स को जिसका सब्जेक्ट कोड है BCS 701। इस वीडियो में हम एआई के यूनिट 1 से यूनिट 5 तक हर यूनिट से 4 से 5 टॉपिक ऐसे देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है और जहां से हमारे मैक्सिमम चांसेस है कि हमारे AKTU में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारा जो इस बार का सिलेबस है वो टोटल चेंज हो चुका है पिछले साल से। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन-कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से हमारे क्वेश्चन इस बार बन सकते हैं। तो क्लियर है, बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बढ़ते अपने पहले यूनिट की तरफ। यूनिट नंबर 1 में ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा इंटेलिजेंट एजेंट कि इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है, वो सब चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ एआई। थर्ड है आपका एजेंट आर्किटेक्चर एंड फोर्थ आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस टू एआई। ये 4 टॉपिक ऐसे यूनिट 1 से जो काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। क्लियर है? अब इंटेलिजेंट एजेंट हो गया, एजेंट आर्किटेक्चर हो गया। अब इन ऐसे टॉपिक्स को आपको कैसे करना है? ऑलरेडी एआई की हमारी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है और वहां मैंने यूनिट 1 से यूनिट 5 तक कंप्लीट आपको काफी डिटेल में हटना और आपके ये चारों टॉपिक्स काफी अच्छे से यूनिट में क्या लगी? अनइन्फॉर्म्ड, and informed, searches, greedy, BFS, and healing, climbing, and से हो जाएंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में ये 4 टॉपिक है। climbing and alpha, beta, punching, and क्या है? Hi, Harsh, and Vampus, word and forward and backward chaining. हर्ष कल DBMS का यार मैं तो बोल रहा हूँ पढ़ लेना यार। उसमें क्या होता है कि एक होता है क्रड ऑपरेशन होती हैं, क्रड ऑपरेशन आती हैं यार DBMS में, तो वो पढ़ लेना। एंड क्वेरी पढ़ के जाना, क्वेरी आती है यार, तो क्वेरी पढ़ के जाना, ये सब आता है यार। कैसे जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा अनइन्फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड सर्च। यहाँ से हमारा मैक्सिमम चांसेस है कि डिफरेंसेस पूछेगा कि इन दोनों के बीच में आपके डिफरेंसेस लाइक पूछ लेगा या डिलीट एंड राइट एंड रीड, सब आती है ना, ये सब पढ़ के जाना यार, आ जाती है आपको कभी बोलेगा कभी। कि साथ शॉर्ट में मैंने फॉर्म कुछ लिखा कि राइट ऑल क्वेरीज लाइक रीडिंग एंड रीडिंग समथिंग कुछ, हाँ, और क्रेड ऑप्शन आ जाता है कभी कभी, पूछ लेना, वो इस पे लिख पढ़ लिखिए के शॉर्ट जाना। नोट कम आने के चांसेस है। डिफरेंसेस आपको जरूर इसके पता होने चाहिए। नेक्स्ट है ग्रेडिंग BFS। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड है हिल क्लाइंबिंग। ये एल्गोरिथम, इसका पूरा प्रोसेस आपको अल्फा बीटा एंड पता नॉलेज, होना चाहिए। फोर्थ आपका अल्फा बीटा प्रोनिंग। ये 4 टॉपिक ऐसे यूनिट 2 से जो आपको काफी अच्छे से कर लेने। क्लियर है? थर्ड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं कि थर्ड यूनिट में हमें कौन-कौन से टॉपिक नॉलेज, नॉलेज नॉलेज बेस्ड एजेंट, प्रोपोर्शनल एंड FQL यूनिट 4 अपना हो गया। AI पर, हाँ भाई यार AI पढ़ रहा हूँ, AI का कल एग्जाम है ना, AI पढ़नी पड़ेगी यार। सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड से पढ़ना पड़ेगा। बैक propagations and supervised
हाँ सही है यार, पढ़ते रहो यार। तुम्हारा आज कौन सा एग्जाम था यार? टॉपिक्स को कर लेना है। तुम्हारा कल यार यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन का तो हो चुका है यार ना, यहाँ पे लाइक 29 को कॉन्स्टिट्यूशन का था ना इधर कानपुर में। फर्स्ट है आपका पैम्पस वर्ड प्रॉब्लम जो है आपकी, वो वैम्पस आपको काफी अच्छे से कर लेनी है। सेकंड आपका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेनिंग, नॉलेज बेस्ड एजेंट एंड प्रोपोर्शनल एंड एफओएल। एफओएल काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप देखोगे तो चांसेस है कि ज्यादातर क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एफओएल से, तो ये टॉपिक आपको काफी अच्छे से कर लेना है। क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन का तो हो चुका है यार तुम्हारा, अब हो रहा है ना कॉन्स्टिट्यूशन का। है? तो ये 4 टॉपिक ऐसे हैं यूनिट 3 से जो काफी इंपॉर्टेंट है और इनको आपको जरूर कर लेना है। क्लियर है? और आपको तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीडियोस में सब कराया हुआ है, सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियोस को कंप्लीट देखना, काफी अच्छे से आपको उसको समझना है। क्लियर है? यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं, तो यूनिट 4 में न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क, परसेप्ट्रॉन, परसेप्ट्रॉन बेशियन, बेशियन नेटवर्क, 5 में क्या है, इसमें क्या है कि लाइक सॉफ्टवेयर एजेंट, ना ए आई मशीन मशीन ट्रांजेक्शन ट्रांसलेशन, मतलब लाइक इट्स कन्वर्ट मशीन ट्रांसलेशन। पहला टॉपिक आपका बैक प्रोपगेशन। बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम ये ऐसा टॉपिक है जो आपको मैं बताऊं कि मैक्सिमम चांसेस है कि ये ओम प्रकाश पढ़ ही रहा हूँ यार। नहीं आएगा, और ये हमेशा बैक प्रोपगेशन का एल्गोरिथम आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। सेक्शन बी या सेक्शन सी में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम, उसके स्टेप या ये होता क्या है, ये आपको क्लियर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग। यहाँ से मैक्सिमम चांसेस आपको डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे कि सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या क्या डिफरेंसेस है। क्लियर है? थर्ड आपका न्यूरल नेटवर्क में आपका परसेप्ट्रॉन जो है वो टॉपिक आपका पूरा अच्छे से होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका बाइसेल नेटवर्क। तो ये 4 टॉपिक ऐसे यूनिट 4 से जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करते। क्लियर है? अब लास्ट यूनिट की तरफ बढ़ता है, यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 में ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो मल्टी एजेंट काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है मशीन ट्रांसलेशन, मल्टी एजेंट नेगोशिएशन लाइक अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लाइक यहाँ क्या AIs like what is the AI? Its goal: artificial intelligence is a branch of computer science that focus on the creating machine or system that can perform tasks which require normally require humans intelligence, such as thinking, learning, problem solving, and decision making, and understanding language. And like school to create intelligent machines, to simulate human intelligence, to solve complex real world problems, to improve efficiency and accuracy, to enabling machine to learn from the experience। हिंदी में मतलब है जो मशीन को इतना स्मार्ट बनाता है कि वह ह्यूमन जैसे एक्ट करे एंड सोचे। स्मार्ट मशीन बनाना ह्यूमन इंटेलिजेंस है। हिस्ट्री: द हिस्ट्री ऑफ AI स्टार्ट इन 1950 and 1956 John's Markethe introduced in the term AI intelligence. Early AI focused on problem solving and logical based systems. Later AI evolved with expert system machines and learning neural networks and deep learnings. Today AI is used to healthcare, education, robots, and itself driving car. Then intelligence agent क्या होता है, like an intelligent agent is the entity that perceive करता है the environment through the sensor and act upon the
environment using the actor to achieve the goal, like autonomy, reactivity, proactivities, and learning ability and relational behaviors. Simple like वो होता है जो environment करता है, डिसीजन एंड ये में क्या होता है एजेंडा एंड एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। खुद डिसीजन लेता है, सिचुएशन को के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना, फ्यूचर के लिए प्लान बनाना एंड सीखना, सही है। टाइप ऑफ इंटेलिजेंस लाइक सिंपल रिलैक्स एजेंट्स, मॉडल बेस्ड एजेंट्स एंड गोल बेस्ड एजेंट्स एंड यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स एंड लर्निंग एजेंट्स। लाइक सिंपल एजेंट सिर्फ कंडीशन देखता है, एंड मॉडल बेस्ड क्या होता है, पास्ट मेमोरी यूज करता है एंड गोल बेस्ड गोल अचीव करता है, यूटिलिटी बेस्ड बेस्ड ऑप्शन चूज करता है, लर्निंग एजेंट्स एक्सपीरियंस से सीखता है, एंड इसमें क्या था uninformed search strategies like uninformed search strategies do not use any additional information about the problems, they explore the search space blindly, like breadth first search bfs, depth first search and depth limited search, ये भी अपना हो गया। लाइक यूनिट टू में अपना काफ़ी है ब्रदर। आपके फेवरेट चैनल एजुकेशन मल्टी आइटम है, इस क्या इस नहीं यार, मल्टी आइटम नहीं है, मैं मतलब जो मिल जाता है उससे पढ़ लेता हूँ। मल्टी आइटम में क्या है कि कुछ एआई के हैं वो शॉर्ट में है ना, जल्दी पढ़ा देते हैं ना, उससे मैं इसलिए पढ़ लेता हूँ यार। मल्टी आइटम से कोई फेवरेट नहीं है मैं अपना यार। इंटरेक्टिव डीपनिंग डीएफएस, यूनिफॉर्म सर्च का मतलब होता है बिना एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ सर्च करना, एंड ये सब बीएफएस डीएफएस का होता है कि इसमें BFS explore करता ऑल नोट्स एट द करंट डेप्थ बिफोर मूविंग द नेक्स्ट लेवल, इट इज अ कंप्लीट बट यूज मोर मेमोरी, इंग्लिश DFS लाइक डेप्थ एक्सप्लोर करता है ऑन पाथ डीपली बिफोर बैक ट्रैकिंग, इट्स यूज लेस मेमोरी बट मे नॉट फाइंड ऑप्शनल सॉल्यूशंस। सिंपल में क्या होता है लाइक BFS लेवल बाय लेवल सर्च करता है, ठीक है। DFS एक पाथ को पूरा फॉलो करता है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक सर्च एंड ए स्टार एल्गोरिथम, ह्यूरिस्टिक सर्च यूज करता है एडिशनल नॉलेज, ह्यूरिस्टिक फंक्शंस टू improve efficiency, एंड ए स्टार एल्गोरिथम कंबाइन करता है पाथ कॉस्ट एंड ह्यूरिस्टिक कॉस्ट टू फाइंड द ऑप्शनल सॉल्यूशंस। हिंदी में ह्यूरिस्टिक सर्च एक स्मार्ट सर्च होता है जो ए एल्गोरिथम सबसे बेस्ट और फास्ट सॉल्यूशन देता है, एंड मिनिमम मिनिमम एफिशिएंसी। आपके 3 ही सब्जेक्ट हैं, हाँ यार मेरे 3 ही अदर हर सब्जेक्ट हैं यार। एक अपना हो गया रेनबल एनर्जी का, एंड अपना कल एआई का है, एंड परसों अपना आईओटी का है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। 3 ही सब्जेक्ट अपने पास यार हैं। लाइक and minimax alpha beta tunings, minimax is used to game playing to minimize loss and minimize gain, alpha beta tunings improve minimax by removing unnecessary branches, एंड मिनमैक्स गेम के लिए यूज होता है, अल्फा बीटा प्रोड्यूस करता है टाइम एंड बचाता है, ठीक है। लाइक प्रोपोर्शनल लॉजिक्स, इसमें का प्रोपोर्शनल लॉजिक्स डील विद द स्टेटमेंट दैट आर आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। प्रोपोर्शनल लॉजिक से स्टेटमेंट ये तो ट्रू देता, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स लाइक FOL इज द मोर पावरफुल देन प्रो पोजिशनल लॉजिक्स, इंक्लूड करता सब्जेक्ट प्रेडिक्ट एंड वेरिएबल्स एंड क्वांटिफायर्स। फॉरवर्ड बैकवर्ड क्लीनिंग, देखो फॉरवर्ड क्लीनिंग डाटा कंक्लूजन होता है, एंड बैकवर्ड क्लीन गोल से ज़्यादा डाटा होता है, सिंपल में चीज। वैम्पस वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है, वैम्पस वर्ड इज ए क्लासिक एआई प्रॉब्लम यूज टू टेस्ट नॉलेज बेस्ड और एजेंट, एंड सिंपल वैम्पस वर्ड एआई एजेंट्स का टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, ठीक है। इट्स एन एनवायरनमेंट ऑफ लाइक एआई एजेंट्स, ठीक है। वैम्पस बेस बेस थ्योरम कैलकुलेट करते प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन द प्रियर नॉलेज, ठीक है। लाइक ये फॉर्मूला है पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, पी बी अपॉन ए इंटू पी ए अपॉन पी बी। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैसे आ गई यार। सिंपल आज हम रिक्वेस्ट करता है बेटर डिसीजन को बदलता है। एंड मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग इज एनेबल टू मशीन टू लर्न फ्रॉम डाटा, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रेनफोर्समेंट। 3 टाइप की लर्निंग होती है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रेनफोर्स्ड, ठीक है। एंड
मशीन लर्निंग मशीन डाटा से सिखाना चाहिए। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स एंड बैक प्रोपगेशन क्या होता है? एनन्स लाइक वर्क्स लाइक ह्यूमंस ब्रेन एंड इनॉमस इनॉमस enums work like humans brain neurons back propagations and used to reduce errors। enhance से human brain जैसा काम करता है, बैक प्रोपगेशन गलती काम करता है, ठीक है, गलती काम करता है। पजल लॉजिक्स लाइक पजल लॉजिक्स हैंडल करता है अननेसेसरी एंड पार्शियल ट्रुथ एंड सिंपल लॉजिक से एक आंसर 0 या 1 में होता है, बीच में ही करता है, ठीक है। ब्रदर मेरा एक unit है, इसमें यार मैं तो बोल रहा हूँ, अगर लाइक ज़्यादा न्यूमेरिकल है तो भाई, तो मैं तो बोल रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको देखो, उनसे लगे कि जो जो इम्पोर्टेंट है ना उनको करो। सब करोगे तो टाइम वेस्ट होगा ना, जो इम्पोर्टेंट है उनको बस करो, और जो लाइक नहीं आए हैं उनको ना ही करो, मैं तो बोल रहा हूँ। एंड एप्लीकेशन एंड मल्टी एजेंट सिस्टम देखो, एप्लीकेशन ऑफ एआई हेल्थ केयर एजुकेशन एंड रोबोट्स एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस एंड स्पीच रिकॉग्निशन सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड सिंपल डॉक्टर टीचर चाहिए। एनएलपी एंड इट्स फेसेस देखो, एनएलपी अलाउ करता है मशीन्स टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। देखो मैं तो बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो उनको उठाओ, और जो उनमें पूछा करो क्वेरी टाइप की, जैसे तुम्हारी डीबीएमएस का होगा ना, तो उठाओ उनको उनको सॉल्व करो। लाइक मैं तो बोलता हूँ क्वालिटी देखो, क्वांटिटी ना देखो यार, मैं तो बोल रहा हूँ जो आए हैं उनको करो, ज़्यादा वो ना करो कि ये सब करने हैं। उठाओ 2-3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और उनमें जो हो उनको करो यार, सबको ना करो, मैं तो बोलो टाइम वेस्ट होगा, और तुम्हारा सुबह टाइम पेपर होगा ना, हम लोगों का शाम टाइम पेपर होता है दोस्तों। And NLP like NLP allow for the machine to understand the human language, lexical syntax semantics and parameters, pragmatic application to human machine translations. Machine translation convert one language to another, rule based statistical and neurals and hybrid and multi-agent systems consist of multi agents and that communicate and corporates and multi-agent system में कई एजेंट्स मिलकर काम करते हैं। मल्टी मतलब मल्टी लोग या हाँ क्वांटम, मैं तो बोल रहा हूँ क्वांटम की, जब क्वांटम पढ़ोगे, लाइक तुमने सेकेंड यूनिट कंप्लीट कर ली, उसके उसके बाद जो थर्ड यूनिट स्टार्ट होगी ना, उसके जस्ट ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे ना, कि ये पूछे गए होंगे 4 ही 5 टाइप के, तुम दिखा दूँ तो जस्ट मिनट। कहाँ गई ए आई पी डी एफ, ए आई प्रिपरेशन, ए आई क्वांटम ए आई, ठीक, तुम्हें दिखाएं, जस्ट वेट कि इसमें कैसे लिखे होते हैं, थोड़ा जूम करना पड़ेगा यार, दिखाता हूँ मैं, जस्ट वेट। क्या होता है कि यार क्वांटम के जस्ट नीचे लिखे होते हैं ना कुछ इंपॉर्टेंट, मैंने यार क्वांटम डिलीट कर दी अपनी ना, क्योंकि दिखाते हैं उसमें उसमें होता है ना कुछ 4 ही 5 क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना, उनको पढ़ो यार, उनसे हो जाएगा, मतलब वो ऐसे है ना कि तुम्हें हो जाएगा आइडिया कि हाँ क्वेश्चन यही से पूछे जाएंगे कुछ। मल्टीजन सिस्टम में होता है, जब तुम्हें लाइक मैं कई एजेंट्स मिलकर काम करते हैं। फाइनल टिप्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइक अब, so artificial intelligence is a branch of computer science that aim to create intelligence machines which can be things learn and make the decisions like humans and AI system can solve the problems, understand language and recognize patterns and adapt to new situations हैं। गोल क्या होता है AI का? To create intelligence machines to reduce human effort, to solve the complex problems, to solve accuracy and speed। सिंपल एआई का मतलब होता है मशीन को ह्यूमन जैसा इंटेलिजेंस बनाना। एआई का गोल है काम इजी करना और स्मार्ट डिसीजन लेना, ठीक है। हिस्ट्री, हिस्ट्री लाइक 1950 में स्टार्ट हुआ एंड एलन ट्यूनिंग, हाँ एलन ट्यूनिंग से एलन एलन ट्यूनिंग ट्यूरिंग
एलन ट्यूरिंग से इज प्रपोज्ड किया था लोगों ने, ये किया था ना, जस्ट गाइस। पता नहीं क्या ही। एंड हिस्ट्री लाइक एआई का स्टार्ट 1950 के बाद ही हुआ है ना, पहले। इंटेलिजेंस एजेंट क्या होता है, देखो, ए एन इंटेलिजेंस एजेंट इज द एंटिटी दैट perceive the environment using the sensor and performing the actions using the actuators to achieve the goal. सिंपल, लाइक इंटेलिजेंस एजेंट्स इन्वायरमेंट को समझकर से लेता है और एक्शन करता है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑटोनॉमी, रेशनलिटी एंड लर्निंग एक्टिविटी एंड प्रो एक्टिवेशन। type of agents like simple relax agents, model based agents, goal based agents and utility based agents and learning agents, ठीक है। हर एजेंट का काम और इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग होता है, ठीक है। कैटेगरी में क्या होता है, वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई। लाइक ये वीक एआई लिमिटेड काम करता है और स्ट्रॉन्ग एआई ह्यूमन जैसा का होता है, ठीक है। एंड ब्रांचेस ऑफ एआई लाइक मशीन लर्निंग, एनएलपी। लाइक न्यूरल क्या होता है, एनएलपी का मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, हाँ। रोबोट्स, एक्सपर्ट सिस्टम्स एक अलग, ठीक है। Environment in AI, environment is everything that an agents interact करता with the, it can be it can be deterministic or stock स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। सिंपल इन्वायरमेंट वो जगह है जो जहाँ पर अलग एजेंट्स काम करते हैं, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ एआई, नॉलेज, रीजनिंग, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग्स हैं। एआई के लिए नॉलेज और लॉजिक जरूरी होता है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट से फाइंड करता है सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टू रीच द गोल। एंड ये एजेंट प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता है, ठीक है। लाइक यू uninformed search does not use problem specific knowledge, it search blindly। ये बिना एक्स्ट्रा नॉलेज के सर्च करता है, ठीक है। बाइनरी, हाँ, ये थोड़ा मैंने पढ़ना। बाइनरी बीएसटी एक्सप्लोर नोड लेवल बाय लेवल्स एंड ऑलवेज फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। सिंपल लेवल वाइज सर्च करता है। एंड डिफेंस क्या होता है, टेस्ट गोज डीपली इनटू द ब्रांच बिफोर द बैक ट्रैकिंग्स। एक पाथ को पूरा फॉलो करता है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक क्या होता है, ह्यूरिस्टिक यूज ऑफ द एस्टिमेट कॉस्ट टू रीच द गोल्स। ये सिंपल सर्च होता है। ये लिंक क्लम्बिंग होता है, like English link clumbing is a local search algorithm but can get stuck in local maxima। greedy based first search, the greedy search choose करता the path that look based the importance। हाँ, मेरा यार, मेरा आईओटी है यार। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये मेरे में है यार। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मेरे में यार है। वो मेरा 2 तारीख को यार है, दिसंबर में। दिसंबर बोले, फरवरी में। And each use both cost and heuristic functions to find the optimal paths. And optimization means finding the best solutions among all the possibilities, best solutions and ढूंढना, optimize करना। सही यार। CSP can solve problem by the satisfying contact and simple rule follow करते हुए solution निकालना होता है।
Mhm. एंड नॉलेज एंड अपॉर्चुनिटी क्या ही मैं बोलूँ बस इसमें वही कन्वर्ट करता है स्पीच कन्वर्ट टेक्स्ट हाँ what is the intelligence agent though? An intelligence agent is the entity that perceives the environment through the sensor and act upon the environment using the actuators in order to achieve the goals. And agents continuously interact with its environment by the sensing the current situation, making the decisions based on that information and performing the suitable actors actions. The working of intelligence agents follow the simple cycles. First, the agent receives information from the environment through the sensor, then it's a process to information using the internal knowledge and reasonings mechanisms. After the deciding the best possible actions, the agent perform the actors using the actuators. This process is continuously repeatedly until the agents achieve its goal. Intelligence agents are the designed to act rationally, meaning they always try to choose the actions that maximize performance. And सिंपल इंटेलिजेंस का एनवायरनमेंट को देखता है और डिसीजन लेता है और एक्शंस करता है। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है जब तक गोल अचीव ना हो। ठीक है, देन एक्सप्लेन करता है। Characteristic the intelligence agents have several important characteristics that make the capables of intelligent behaviors. Autonomy is one of the main characteristics, which means the agents can operates without direct humans control reactivity and refers to the ability of agents to respond करता है to challenge changes to environments. Activeness means that agents can take initiative and plan actions to achieve the future's goals. Right? Type of intelligence agent though there are different type of intelligence agents based on their levels intelligence like complexity and simple reflex agents क्या होता है agents act only the basis of current perceptions and ignores the past experience. A model based agents maintains an natural model of the environment and the use of the make better than its decisions. A goal based agents take decisions and based on the achieving the specific goal, while utility based agents select करता है activities and maximize maximize over happiness or utility. Learning agents is most advanced type which can learn from the experience and improve करता है behavior over time. These agents are used to कैटेगरी क्या होता है इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी कैटेगराइज्ड into weak AI and strong AI. Like weak AI, also known as the narrow AI, is designed to perform the specific tasks to speech recognition or image classification. It does not process करता है general intelligence. Strong AI, also called the general AI, refer to the system that can perform any intelligence tasks that humans can do. Strong AI can think, understand, and learn uh, like humans. Currently, most AI systems are weak AI, while strong AI is still under the research. Weak AI तो प्रकार की होती है AI, weak and AI, strong AI. ठीक है, and explain the branches of AI. The artificial intelligence consists of various branches like machine learnings, which is enable to machine to learn from data. Natural language processing allow machines to understand humans' language. Robotics features and or creating the intelligence robots that can be interact with the physical worlds. Other branches में क्या होता है include करता है expert systems, which mimics humans expert and computer visions and which enable करता है machine to interpret visuals information. These branches together contribute to the development of the intelligence systems हैं. And simple like क्या होता है AI के अलग अलग पार्ट्स हैं जो लाइक जैसे NLP रोबोट्स जो अलग काम करते हैं। ठीक है, then expert AI environment types. And environment types environment in AI everything that an agents interact with the environment and can be deterministics or the
depending on the weathers and outcome of the actions to predictables. They can also be statics or dynamics, based on whether they change over time. Bismillah. And then इसके बाद हम लोग करेंगे environment is everything that agents, इसमें agent में पढ़ लिया AI environments, and environments, an environment in AI is everything that can that an agent interact with the environments and can be deterministic or the statistics depends on the whether it outcome of actions predicted. They can be also be statics, dynamics, and based on whether they can change. And हम पढ़ेंगे एक component of AI. देखो, the main component of AI include knowledge representations, reasoning, learning, and problem solving, and knowledge aggregations, and store information about the words. Reasoning help करता drawing calculations from the knowledge. Learning allows system to prove करता from the experience, and problem solving help to achieve the goal. And step by step problem solving agents work by the first defining the problems and defining initially and goal state. It's then explore possible actions and select the best sequence of actions, reach goal. After the executing the actions, the agents evaluate the result and update the knowledge or if required. And like reforms research strategy build करता है अभी का second. Uninformed strategy. Uninformed search strategy are also called the blind search strategy. In these strategies, our agent does not have any extra information about the problems and or the goal. The agents only know the initially state the possible actions, and the goal state it search the solutions by the exploring all possible path step by step. These search strategies are simple to understand, but they take more times to and memory because they do not know which path is better. Uninformed search mainly you when the known heuristics or additional knowledge and about the problems is available. So, breadth first search and depth first search are common example of the uninformed search strategies. It's in BFS. इसमें क्या लिखा है first search is the uninformed search strategy in which the search strategies are from the root node and explore all the nodes at the current levels before moving to next. uh, explore the current level before moving the next level.
This means BFS search the problem space level by the level, and the main advantage of the BFS is that always find the shortest path if all step costs are equal. Uh, BFS is the complete algorithm, which means it will be definitely find solutions if one exists. However, the major disadvantage of a BFS is that require a large amount of memory because it store all the nodes of each level in the memory. Like depth first search, depth first search is the uninformed search technique in which agents explore the path deeply before explore path, and it serves the continuously along with the branches and goals it formed the path ends after the agents backtrack and explore the another branch. Device is use less memory compared to BFS, which is the main advantage. However, the difference is not granted to find the shortest path. Sometimes it's maybe get the stuck in finite loop, and the device is always suitable for the complex problem. What is the depth limit search (DLS)? Depth limit search is the modified versions of depth first search. It is the strategy. A depth limit is fixed before start the search does not go beyond the predefined depth. the main the main the main benefit of DLS uh, is let's look. The main benefit of DLS is the involved the infinite loop problem differs. However, its the solution exists beyond the depth limit, then the algorithm will fail to find the solutions to the current different limits. The very important in this strategy. Explain attractive attractive deeping depth first search. Mm. Interactive deeping depth first search combined with the advantage of breadth first search and deep first search. As a strategy, depth first search is replaced many times with the increasing depth limits, and IDDFS use less memory like DFS and find the optimal solution like BFS. It is very useful when the depth of solutions is not knowledge advanced to the benefit of IDFS is widely used in AI problem solving. What is the what is the heuristics search? Explain the components. Heuristics depth is an informed search strategy that use the additional information to find the solutions faster, and this information is provided करता है in the form of heuristics functions which estimate the cost from the current state to goal states. The main component of the heuristic search is the heuristic functions. HN help करता है the agents to choose the most promises path and avoid unnecessary path. Heuristics first is the faster and more efficient than uniformed search. Examples include करता है a search, a greedy, best first search, ठीक है. Different between the blind search and heuristic search. Blind search does not use any extra information about the problems. It explores all the possible paths without knowing which is better. Because of this, blind search take more times and memory. Heuristic search use the heuristic functions to estimate the distance to goal. This make the search search faster and more efficient. Efficient and simple but slow. While heuristic search is complex but fast. And explain healing climbing algorithms. Healing climbing is local algorithms which is the agents move from the current state that neighboring state that has better value. The agents always try to improve the current solutions step by step.
The main problem of feeling screaming is that I get stuck and local maximum planners and this manage the agents may stop. Even better solutions exist करता. These problems can be reduced using the techniques like random start or simulated meanings. And explain the A star search algorithm. A star search is the informed search that use both actual cost estimate cost to reach the goal. It is used to evaluations and functions like fn is equal to gn plus hn. इसमें क्या होता है कि fn इतना होता है where the gn is the cost and hn होता है estimate. ठीक है, इसमें हो जाएगा fn is equal to gn plus hn and अपना like search is informed search algorithm that use both the actual cost and estimate cost. Actual and estimate costs is called the A star. ठीक है, where the A search is completely and optimal if the historic function is admissible. This mean is always find the base solutions because of A star is widely used in the path finding and navigation problems. And हम लोग करेंगे अब what is the constant satisfaction problem, CSP. The constant satisfaction problem is problem where the solutions must be satisfy a set of constant is consist of variables domain and constants. Each variable must assign a value from the domain such that all the constant are satisfied. And example CSP include करता है sudoku map and coolings and crypto and arithmetics problem. CSP is commonly used in the scheduling plannings and resource allocations problems. Yeah. Yeah, what is the propositional logics क्या है propositional logics explain basic properties. Propositional logic is the type of logical used to artificial intelligence in which knowledge is represented using the simple statement called the propositions. Each proposition has truth value which can be either true or false. Propositional logic does not deal with the object or relations, it's only deal with the whole statements. And the basic properties of propositional logics include use of logical operators such as the and or not, implies and if and only if. These operations help करता है combining efficient propositions to form complex expressions. Propositional logic is easy to use the understand but the limited because it can be represent deal relations between the objects. And what is the logical operators? Like logical operators are symbols that used to connect the propositionals and logics, common logics like operations and or not and implies and uh, by conditionals. Each operations follow the specific truth rules. For example, and is true only when the both statements are true, or is true when the at least one statement is true. Not change true to false and false to true implies is so the conditional relations between the two statement. Logical operator क्या होता है help करता है reasonings and decision makings in AI systems. And system system explain the application of the limitation and propositional logic. देखो propositional logic is used to use in many AI applications such as the decision making systems, expert system, and digital circuits. It's useful for the representing simple fact and rules in a clear and structured way. However, the propositional logic has limitations. It can be represent relationships between the objects and express the complex knowledge. It also does not support variables and quantifier quantifiers. And however the proportional logic is limited, it cannot be
lessons and between the object and express complex knowledge. It also does not support variables and quantifier due to these limitations, and these limitations and advanced logic systems like first orders logics and अब भाई मैं यार देखो मैं कोड वोड का सर ओनली अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हो यार। मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ डीपली कि मैं कोड किसने किया था, बस मैं देख रहा हूँ यार। अपना एग्जाम निकल जाए बस खत्म काम हो जाएगा। जब 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 पढ़ेंगे जनरल तब बता देंगे तुमको, ठीक है। अभी मैं जनरल नहीं पढ़ रहा हूँ यार, बस सिलेबस अपना कंप्लीट कर रहा हूँ यार। हम्म, यार जो मतलब ह्यूमन की तरह एक्ट कर सके एंड लॉजिकल थिंकिंग कर सके, प्रेडिक्ट कर सके, उसे बोलते हैं यार। First order and logical first logics and advanced from the logicals and AI knowledge and modern drills by the unlike professional logics, FQLs can be represent objects, relationships and properties. The main component of the FQL include करता है constant variables and predicts functions and quantifiers such as the else capital used to express about all objects or some objects for हाँ भाई कानपुर से यार। Vampus words and vampus word problems. And it's the knowledge based agents, it's intelligence agents that use the knowledge based on make decisions that there is no option structure about the words and the interface engines use to knowledge to the draw conclusions. And the vampus the Wampus words is a classic problem used to in AI test knowledge and based agents. It consists of a consist of grid words containing the pit and monster called Wampus, and Wampus school agents must be find the gold and return safely without falling into the pits or being killed by the Wampus. Agents use logical reasonings and sensory informations and the small orbits and to make the safe decisions, and Wampus words help with understanding the regions planning and decision making AI. इसके हम लोग करेंगे explain the pieces of risk Wampus words. Piece stand for the performance measurements environments and actuators for the censoring the Wampus words. The performance measures include करता है finding the goal and existing safely, the environment grids with pits and vampers. The actuators include करता है actions like move words and turn grabs and shoots. Sensors करता है include small bridges and glitters and bump piece help to clarify finding the agent's task and moments. And हम लोग पढ़ेंगे फिर difference between the forward chaining and backward chaining. Forward chaining is the data driving is reasoning methods that start with the counting fact and applies rules to reach a conclusions, and it's moving step by step from the fact it's goal. For backward chaining is the goal drive methods
methods methods and supporting the forward chaining use of expert system, while backward chaining is used to diagnostic systems. What is the relation of logics? Explain its role and the product logics. This lesson is the interface technical used to logical the new information from the existing knowledge. It is the works by the combining clauses and eliminating the common literals as predict logic solutions. Yeah, we don't know. Uncertainty in artificial intelligence means to situations and where an AI system does not have any complete or expert exact information about the information and it's something कुछ क्या ही होता है. And uncertain development means situations where the AI system does not have any complete or exact information about the environments. In real world problem, AI system often the complete data in a noisy and input and predictables and outcome. Because of this becomes difficult to make perfect decisions and means certainly the main features the main source of the uncertainty includes incomplete knowledge, sensor errors, changing environment, and humans' behaviors. For example, medical diagnosis and all symptoms may not be visible clearly. To handle the AI users probably based on the methods such as the Bayesian reasonings and puzzle logics. And हम लोग पढ़ेंगे explain the probabilistic reasonings and its key concept. And the probabilistic reasoning is the methods used to in AI handle करता है uncertainty by the using the problem theory instead of the stylings and some things. Statistics.